Assalamu alaikum everyone. My name is Wardah Nadeem and I'm a third semester mass communication student at School of Social Sciences NUST. And in this video, I'm going to be talking about my experience in NUST and my overall experience with this degree and what are some pros and cons of it. So let's get to the questions. जो सबसे पहला सवाल किसी पूछा जाता है कि why did you want to come to this field? Well, in my case, I don't have a very cute story how I always wanted to come into mass communication and I wanted to change the world. I wanted to change the world, how I wanted to change how films are made or how ads are made or how journalism is done. No, I didn't want to do that. Originally, I intended to go a BBA and eventually go an MBA. However, जब आप NET देते हैं जो कि नस का एंट्रेंस टेस्ट है, उस टाइम पे भी मैंने ये नहीं सोचा हुआ था. इट वॉज व्हेन एक नस का जब आपकी लिस्टें लगने वाली होती हैं उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर कि यू कैन चेंज योर प्रेफरेंसेस एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ getting an admission in NUS because I always wanted to go to NUS. Like in my A-levels, I really saw कि NUS की ranking ऊपर जा रही है. NUS is a nice university, so I wanted to apply in it in Pakistan. I had some other plans to go abroad as well. However, that did not work. So NUS was an option that I had in Pakistan. तो coming back to the story, मैंने वैसे ही डाल दी mass communication अपनी preference list में along with psychology, BBA and public administration. अल्लाह की मर्जी थी कि मेरा mass communication में हो गया. At first I thought कि मैं इसको बाद में BBA में change करा लूँगी eventually after the first year. लेकिन 2 courses पढ़ने के बाद we studied 2 courses of mass communication in the first year. I somewhat realized that this somewhat aligns with my field of interest, in my area of interest. So I decided not to change my field and stick to mass communication. I'm going to talk about what are the majors that mass communication typically has. So 3 तरह के majors offer होते हैं NUS के अंदर. You have to select your major in the 6th semester. That is the second part of your third year. So the majors that are offered are advertising and PR, journalism, and film and media. You can select any one of them and proceed with your degree. However, as of जहाँ तक मैंने अपने सीनियर्स से सुना है और कुछ इंस्ट्रक्टर्स से सुना है, the major does not show on your degree. So like if you selected for example PR and ad, but आपने अपने डिग्री के बाद रियलाइज़ किया कि oh no, I want to do something in film, you can proceed on to with that in your master's program क्योंकि वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर it won't be showing के ad PR का major, it would be just showing bachelor's in mass communication. सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं कि what are the job opportunities after you graduate from a bachelor's degree in mass communication. जितनी मैंने रिसर्च की है उससे आई नो दैट the options are endless. You can be anything and everything. I'll give you a very brief list, but you can always do your research and get more information. So some of the opportunities you can have in the job market is you can be a journalist, you can be a filmmaker, you can be a PR specialist, which is public relations specialist. You can also be a copywriter, you can also be a writer, a regular writer, a content writer. However, I feel like with AI, this field of content writing is somewhat declining because AI is kind of taking the place, but nothing can stop you, right? Then you can also be a social media manager. That is a very common job. You can do freelancing with that, obviously. You can also be a graphic designer. You can be a lecturer, of course. You can also be a video editor, a radio production manager. You can do radio shows, you can do TV shows, you can create content on YouTube, you can create content on TikTok. The world is your oyster and you have to navigate through it. That is what I say to my juniors as well. Some of the universities that offer mass communication at bachelor's level include NUST, that is where I am studying. Then there is NAML, that is situated in Islamabad as well. Then we have GCU Lahore, former Custody University in Lahore.
we have Beacon House National University, and there are many more. I'm sure you can explore many more on the internet, and you'll be able to find your perfect university in your city. Or if you want to come and stay in a hostel, you can also do that. An advice that I would love to give to someone is be open. Be open to the ideas that everyone gives you. Be open to the criticism someone gives you. आपके जो instructors आपको criticism दे रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को आप ज़रूर एक्सेप्ट करें. आप उसको ज़रूर अपने काम के अंदर बाद में इंक्लूड करें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू वर्क टू गेट बेटर. वन ऑफ माई इंस्ट्रक्टर्स इन दिस सेमेस्टर सेज कि कभी भी अपने काम से मोहब्बत ना करो, बिकॉज व्हेन यू फील इन लव विद समथिंग यू डोंट फाइंड फ्लॉज इन इट, एंड व्हेन यू डोंट फाइंड फ्लॉज इन इट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसमें कोई गलतियाँ हो सकती हैं. सो ऑलवेज लीव अ रूम कि हाँ मेरे काम में कोई गलती हो सकती है. इंसान ही है ना इन द एंड ऑफ द डे, तो गलतियाँ तो हो सकती हैं. तो बी ओपन. आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें. अगर आपको बुरा लगता है किसी का क्रिटिसिज्म, बाद में जाके उनसे कम्युनिकेट ज़रूर करें कि मुझे आपका क्रिटिसिज्म इस बारे में बुरा लगा था, कैन वी टॉक अबाउट दिस. सो ये एक चीज़ मैं ज़रूर लोगों को कहती हूँ जो मास कम्युनिकेशन में आ रहा है या जनरली किसी और फील्ड में भी जा रहा है, कि बी ओपन टू क्रिटिसिज्म. दैट रियली हेल्प्स. फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर आई एंड दिस वीडियो इज़ कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं ज़रूर अप्लाई करें. मास कम्युनिकेशन इज़ एन अमेजिंग फील्ड. वी नीड गुड पीपल इन दिस फील्ड. वी नीड पैशनेट पीपल इन दिस फील्ड, बिकॉज जब तक पैशनेट लोग नहीं आएंगे ये फील्ड एक्सेल नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर स्पेशली. घबराएं नहीं, कतराएं नहीं. वंस यू कम इन टू फील्ड, जब आपके सर पे पड़ेगी तो यू विल बी एबल टू डू दिस. और अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है, कि कोई डर रोक रहा है, उस डर को लेट गो ऑफ दैट डर. पार्डन मी, लेकिन उस डर को छोड़ दें, उस थोड़ी देर के लिए भूल जाएं एंड जस्ट अप्लाई. अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें. एंड आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक विद योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जर्नी. आई प्रे टू अल्लाह कि आपकी जर्नी अच्छी जाए एंड यू लैंड इनटू योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एंड पास विद एक्सेलेंट ग्रेड्स. Thank you so much for listening to me. This is me, Wardah, signing out.